क्या आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव अ लॉट ऑफ व्यूज बट यू डोंट नो हाउ टू पुट देम इनटू अ राइटिंग पीस, या फिर आपके पास व्यूज बहुत सारे होते हैं, आपको उसको लिखना आता है बट उन्हें स्ट्रक्चर करना नहीं आता है? दैट्स द रीजन आपकी राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है जितना कि अच्छा आप उन्हें बना सकते हैं. In that case, I think you're at the right place. So hi everyone, welcome back to Teacher with Wings, where we talk about educational behavior and so many other important things which apparently have a lot to do with your child's growth years. मेरे previous video में मैंने reading skills को improve करने के लिए अपने कुछ tips and tricks share किए थे. आज मैं उसी skill के brother skill यानी कि writing skills के बारे में बात करने वाली हूँ. I'm going to talk how you can look at your writing skills, analyze where do you stand and exactly how you can improve it as well. So without wasting any more time, let's get into the video. हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने किसी लाइफ एक्सपीरियंस को इसके साथ कोलैबोरेट कर सकूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस वे आई कैन एसोसिएट विथ माई ऑडियंस अ लिटिल मोर. तो अपनी राइटिंग स्किल के पीछे भी एक बड़ी ही अमेजिंग सी मेरी लाइफ जर्नी है विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू. सो व्हेन आई वाज इन क्लास 6th, 7th and 8th, I had an English teacher. His name was Nazmi sir, and at that time I was studying in केंद्रीय विद्यालय बालेश्वर. तो वहाँ पे राइटिंग का as such इतना ज़्यादा कोई कल्चर था नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी CBSE एंड NCERT के करिकुलम में राइटिंग इज just a part of the entire paper that we used to give. But Nazmi sir हमें बहुत सारे writing practice करवाया करते थे. Like every single day we used to have 1 or 2 topics for which he would ask us to write, and we would just write it and show it to him. So that's how even I started. मेरा मैथ्स बहुत बेकार था, तो मुझे पता था कि अगर मुझे मेरी स्कूल ईयर्स में सस्टेन करना है then I have to be good in my English, Hindi and all of these social studies kind of subjects. So that's how I started my journey of writing. And slowly and steadily, I just kept on improving. And today I'm so proud to say that I have written so many articles, not just for my own personal journals and records, but also for my school, which some have already been published and some are in the process to be published in the time to come. तो अपनी उन सारे एक्सपीरियंसेस को कोलैबोरेट करके आज मैं इस वीडियो में अपनी टॉप 5 वेज के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी प्लस अपने बच्चे की राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो माई टिप नंबर 1 वुड बी नेचुरल एज यू कैन. ये ना मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ यूनिवर्सल टिप विच कैन वर्क फॉर एनी थिंग एंड लिटरली एनी चैलेंज इन योर लाइफ. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. I'm not a very novel reading kind of a person, but in the last 2, 3, 4, 5 पता नहीं 3-4 साल में मैंने सिर्फ कुछ novels को ही complete किया है in some or the other manner. One was 5 Point Someone by Chetan Bhagat. The other one was The Monk Who Sold His Ferrari, and then a very recent one, Think Like a Monk, written by Jay Shetty, right? Obviously अगर मैं इसकी learnings की बात करूँ, then the amount and the gravity of learning that I attained after reading The Monk Who Sold His Ferrari is way higher as compared to the other two. But my go-to novel would always be 5 Point Someone. I mean, this has got nothing to do with my Chetan Bhagat love or anything. It's just that the English that Chetan Bhagat uses, it's very natural, easy to understand, and at the same time more relatable, more of an Indian kind of writing. So that would be my very first tip. Try to be as natural as you can. I mean, you don't have to have it's super amazing English just like Shashi Tharoor. Neither do you have to be as poor as I go, I come. Okay. आपको इन दोनों के बीच में कहीं रहना है. एंड अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप जितने ज़्यादा नेचुरल आइडियाज़ को इस्तेमाल करके उन्हें पेन डाउन करोगे, उतना बेटर आपकी परफॉर्मेंस रहेगी. सो बी एज नेचुरल एज आई कैन. एंड व्हेन आई से दिस, आई मीन ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स विथ विच यू आर 100% श्योर कि इफ आई एम राइटिंग सपोज से confidence. So I know what that means. I'm very much comfortable with its meaning, antonym, synonym, and at the same time, what would be the best place I can use it. So try to be as natural as you can. That's my tip number 1. Tip number 2 would be, please try to use the sentences which are absolutely in your comfort zone.
I mean, I have seen people who write sentences as long as Shatabdi Express or maybe Duranto or something like that. You don't really need to, because जब आप बहुत लंबे sentences लिखते हो तो आपको इस तरह के sentences में the possibility of error becomes very high. That's one thing. And second thing is there's a concept called disassociation of the idea. So when you write a very long sentence, there's a lot of possibility that the idea or the emotion that you had in the beginning of the sentence, it does not sustain till the end. So it's always great to have the sentences which are comfortable for you. There's nothing like छोटा सेंटेंस और बड़ा सेंटेंस और whatever. अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग स्किल इतनी कॉन्फिडेंस से भरी हुई है कि that you can write a sentence as long as 3 huge lines, it's good. But if you think that you're not that comfortable and you can maybe write down एक line का sentence, then also there is no harm in it. So the number 2 suggestion would be make your sentences as per your comfort. Neither too long nor too short, or maybe the best way would be just exactly how you think you can write it down. तो ये था मेरा टिप नंबर 2. टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं. Always and always structure your ideas. The more structured you are in the first 1 minute of getting the topic where you have to write down your paragraph, the better you would be towards the end when you will finally put it up on the paper. I'll give you an example. जब कभी आप कुकिंग वीडियो देखते हो तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पूरी वीडियो को ना शुरू से लेके अंत तक देखो, सो दैट आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी इम्पोर्टेंट सेक्शन को मिस आउट ना कर जाओ, राइट? Once you have watched something, it will be easy for you to replicate the same thing and actually make something very delicious to be served on the table. Writing is just like the same kind of an art. Structure your ideas in the very beginning. If you want to write about someone or something or some place, it's always great that you make your small little pointers that I'm going to be mentioning this and this, and then you write it down. I think well begin is half done. That's exactly what I want to say over here. Well, that brings me to my tip number 4. Use graphic organizers. वैसे मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में कुछ sample graphic organizers को डाल देने के लिए. I don't know if my video would reach to that concerned teacher or not, but few years back we had an English teacher, Shraddha ma'am. She basically came up with this idea and she said कि we should give graphic organizers to the kids at least till class 5 so that they know how to structure the idea. Exactly what I was just talking about a point previous to this one. जब हम graphic organizers बच्चों को दे देते हैं तो बच्चे उसमें बहुत अच्छी तरीके से अपने पॉइंटर्स को, अपनी आइडियाज़ को सर्टेन हेड्स में आराम से पुट इन कर सकते हैं, एंड देन दे कैन कंपाइल ऑल ऑफ दैट एंड पुट इट अप इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, एसे और वॉट एवर इट इज़. तो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स का नॉट जस्ट टिल क्लास 5, आई थिंक इसके आगे भी आप जितना इस्तेमाल कर सके उतना आपको करना ज़रूर चाहिए. मैं कोशिश करूँगी कुछ सैम्पल ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को डाल सकूँ, अटैच कर सकूँ, so that you can take a reference of that somewhere over here, there, or whatever my editing skill can allow me to do. And now I'll come to my golden tip, which is my tip number 5, and that would be whenever you are done with any piece of writing, it's always a great idea to do proofreading of whatever you do. Like कई बार मेरे साथ में भी ऐसा होता है कि when I write something, my brain is already charged with a lot of ideas, so much so that in my mind I think that okay, this is what I have typed / handwritten, but then apparently I did not really write that, because there's always a clash between the speed in which I'm thinking and the speed in which I'm writing. So proofreading is always a great idea. कभी भी किसी भी राइटिंग पीस को किसी को प्रेजेंट करने या सबमिट करने से पहले एक बार अगर आप उसकी प्रूफ रीडिंग कर ले, वो बहुत अच्छा होता है, ताकि कहीं पे भी अगर ऐसा कोई कंपोनेंट था which you wanted to present in a certain way but it didn't really come up in that way, or maybe you skip some words or sentences or anything of that sort, you can edit it before you submit it. तो ये थे मेरे आज के top 5 ways in which you can improve your child's and your own writing skills, no matter at what age or college or school level, wherever you are. I think you will find it more helpful once you try to follow them and implement them in your next writing assignment
और हाँ, अगर आपको सच में लगता है कि मैंने जो भी टिप्स यहाँ से शेयर करी है आपके साथ में वो आपको थोड़ा सा भी इम्पैक्ट करी हो या फिर कोई वैल्यू ऐड करी हो, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, बिकॉज आगे मैं ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ. और हाँ, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर चेंज which I have done to my life and to my career, which I would definitely be sharing once I cross a certain subscriber limit that I have in my mind. So that was it for today. If you liked my video, don't forget to subscribe, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये कैसा लगा. एंड आई विल बी वेरी 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 हैप्पी अगर आप इन सारे टिप्स को इस्तेमाल करके देखें कि आपकी राइटिंग स्किल्स पहले किस लेवल पे थी और अब किस लेवल पे है. सो जल्दी मिलूंगी मैं आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड हाँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो यार, लाइफ वैसे भी बहुत शॉर्ट है, इतना क्यों परेशान होते हो. सो बाय फॉर नाउ.